Very good morning to all of you and welcome to BYJU'S Exam Prep, the most comprehensive preparation app for all exams. So as we all know, from Monday to Thursday, 11 a.m. in the morning, we come up with the Hindu analysis. Today is 9th January, that is Tuesday. And we are here with the Hindu analysis of 9th January. So if I'm audible and visible, just write in the comments, yes sir, you're audible. अच्छा, 9th January को एक famous day मनाया जाता है. So what is the name of the day associated with 9th January? If you know it, please answer it in the comment section after the class is over. Class over होने के बाद नीचे comment section में लिखना कि 9th January को कौन सा famous day मनाया जाता है. So I'm waiting for the answers. Okay, let's move on. So there was an article, the most important article. Supreme Court set aside release of 11 life convicts in Bilkis Bano case. So this we will be discussing it. Very important. The next is India Maldives discuss SPAT. Israel steps into controversy. So we will be discussing about these two. Yes, number after very good. 9th January celebrated as Pravasi Bharatiya Divas या NRI Day, Non-Resident Indian Day, also known as Pravasi Bharatiya Divas. Okay, yes, that's 9th January. Yes, good. And go and find out why do we celebrate on 9th January. क्या खास है? What is so special on 9th January? Okay, yes. So let's talk about it. Supreme Court set aside release of 11 life convicts. Convicts मतलब क्या होता है? देखो, there is a term called as conviction and there is a term called as acquittal. ठीक है, सब. Conviction मतलब क्या था? Proven guilty in a court of law. अदालत में proven guilty. And acquittal मतलब proven innocent in court. ये दोनों अदालत में होता है, ठीक है. So the life convicts means those who were actually given the premature release, they were already proven guilty in a court. अदालत ने उनको दोषी करार दिया है. उसके बाद they were in jail and all, and their actually sentence were reduced by the government and all. So that was challenged in the Supreme Court, and the Supreme Court actually set aside the release of 11 prisoners. Means they are supposed to go back to the jail again. बेंच रिप्रिमांड्स का मतलब होता है एक तरह से डांटना के सेंस में, या यू कैन से दैट रूलिंग गवर्नमेंट इन गुजरात फॉर एक्टिंग इन टैंडम विद प्रिजनर्स एंड आल्सो दीस वर थिंग्स इन द न्यूज. द सुप्रीम कोर्ट ऑन मंडे क्वैश्ड द ऑर्डर ऑफ एन मास रेमिशन मतलब होता है सेंटेंस रिड्यूस करना, है ना, रिड्यूसिंग द सेंटेंस, सजा को कम करना, समथिंग लाइक दैट. By the state government on August 2022 to 11 men sentenced to life imprisonment for gang rape of Bilkis Bano and other case and all, including a 2-month infant during the 2002 riots. So terming the BFL Miss Bano, who was pregnant at that time, and her family member, etc. and all. So these are the things the judge said that yes, crime was driven by communal hatred and yes, they should not be given release and all. और भी उससे रिलेटेड चीजें. अ वुमन डिजर्व्स रिस्पेक्ट हाउसएवर हाई और लो शी मे बी अदरवाइज. अच्छा, एक चीज बताना, राइट टू डिग्निफाइड लाइफ is a fundamental right. Under which article is a fundamental right? Under which article? Please answer it in the comment section. Right to dignified life या right to live with dignity is a fundamental right. Under which article? आप comment section में बताओ. I'm waiting for it, है ना. So a woman deserves respect however high or low she may be otherwise considered in society or to whatever faith she may be belongs to, है ना. कोई भी रिलीजन है, किसी भी कास्ट रिलीजन है, किसी भी तबके से आती हो, उसको रिस्पेक्ट डिजर्व करती है वो लेडी, है ना. So that is what the judge has written. Okay. Yes, number आफ्ताब आस्था वस्ती, you both are right. So basically the right to dignified life, the right to live with dignity is actually derives from Article 21, that is right to life, है ना, right to life and liberty. ठीक है, yes. Okay. So Bilkis Bano case, grants of remission, classic case of using Supreme Court order to violate the law and all. So this is what the Supreme Court has said. Actually क्या हुआ था, मई 2022 में एक decision आया था, the previous order by a judge, by some other judge of Supreme Court. Now he is retired. So he had allowed actually that the convict, one of the convict actually, R.B. Shah, you can say, for premature release in terms of state remission policy of 9 July and all. So that it will be the Gujarat government who will decide. देखो actually हुआ क्या था, थोड़ा सा आप समझना होगा. The crime happened in the state of Gujarat. But I hope you are aware the Supreme Court has power to transfer a case from one state to another state, right? To ensure that justice should happen. So in that case, the Supreme Court had transferred the case from Gujarat to Maharashtra.
So the crime happened in the state of Gujarat, but the trial happened in the state of Maharashtra. ओके यानी सारा केस जो है वो पूरा जो प्रोसीजिंग है वो महाराष्ट्र में चला था, सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसफर किया था. आप देखो लिखा ना, अगस्त 2004 सुप्रीम कोर्ट मूव द ट्रायल फ्रॉम गुजरात टू मुंबई आफ्टर बिल्किस फेस डेथ थ्रेट्स एंड ऑल. एंड इन 2004 में ट्रांसफर किया गया था. 2008 में द स्पेशल जज लिखा ना, स्पेशल जज कन्विक्टेड 11 पर्सन ऑफ गिल्टी. सो दे फाउंड इट, आई मीन दैट यस दे वर कन्विक्टेड ऑफ द क्राइम एंड ऑल. तो ये सारी प्रोसीजिंग महाराष्ट्र गवर्नमेंट में चली थी. अब डिबेट ये था कि who should, if there is a requirement for remission, who should give the remission, whether a Maharashtra government or a Gujarat government. कौन सी गवर्नमेंट रेमिशन देगी अगर उनको सजा को कम करना है. So basically Gujarat government gave it, but the Supreme Court said no, the Gujarat government do not have the right. It is actually the Maharashtra government who can give. तो ये गलत इसलिए है कि गुजरात गवर्नमेंट के पास ऑर्डर पावर नहीं है, बल्कि जहां केस चला, दैट इज द महाराष्ट्र गवर्नमेंट हैज द पावर टू गिव रेमिशन, नॉट द गुजरात गवर्नमेंट. ओके, यू गॉट इट? आप समझ गए? एंड दैट इज व्हाट यू शुड बी नोइंग अबाउट इट. सो दिस इज द बेसिक थिंग. आप इसको थोड़ा सा और डिटेल पढ़ लेना. गो एंड रीड समथिंग अबाउट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेमिशन, रेस्पाइट, कम्यूटिंग द सेंटेंस. ठीक है, ये सब का आपको फाइंड आउट करके पता करो कि ये सब का क्या डिफरेंस होता है. एंड देयर इज वन मोर कॉल्ड एज पार्डन. दीज आर द 4 टाइप्स ऑफ रिड्यूसिंग द सेंटेंस. 4 तरीका होता है पर सजा को कम करने का: रेमिशन, रेस्पाइट, कम्यूट, पार्डन. ये चारों में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है. गो एंड फाइंड आउट द डिफरेंस एंड ऑल. ओके, नाउ दिस इज अ क्वेश्चन फॉर यू. अगत्ती, बंगारम, कावरत्ती आर इन द न्यूज. दे बिलोंग टू व्हिच कंट्री? इटली, कनाडा, मालदीव्स, इंडिया. एंड प्लीज आंसर इट इन व्हिच कंटेक्स्ट इट इज इन द न्यूज. ये तीनों जगह जो है वो न्यूज में है. ये कौन सी कंट्री, मुल्क से बिलोंग करती है? सो प्लीज आंसर इट इन द कमेंट सेक्शन. सबको लाइक बटन प्रेस करते जाना. एवरीवन प्लीज प्रेस द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एज वेल. यस, एनीवन? व्हाट इज द राइट आंसर? यस, नंबर ऑफ द वेरी गुड. अगत्ती, बंगारम, कावरत्ती, these all are islands of Lakshadweep. And I think in the past class I have done it, that Kavaratti, I have told you that Kavaratti is the capital of Lakshadweep. Yes, Priya Chavan, you are also right. देखो, this is PM Modi's tweet and he talked about Agatti, Bangaram and Kavaratti. I had the opportunity to interact with the people of Agatti, Bangaram and Kavaratti. ठीक है, ये तीनों islands हैं, और भी बहुत सारे islands हैं, but these 3 were in the news. That is why I have asked you. And Kavaratti is important because it is the capital of Lakshadweep. ठीक है, तो इसलिए और ये important हो जाता है. ठीक है, yes. अमन कुमार मिश्रा, you are also right. हाँ, तो यहाँ पर इंडिया है. दिस इज एक्चुअली द लक्षद्वीप आइलैंड है ना, ऑफ कोर्स पार्ट ऑफ इंडिया. कावरत्ती इज इट्स कैपिटल. ठीक है, अब इसमें हुआ, ये कहते हैं इंडिया मालदीव्स डिस्कस पैट इजराइल स्टेप्स इनटू कंट्रोवर्सी. सो इवन आपको पता होगा व्हाट हैपेंड वाज पीएम मोदी रिसेंटली विजिटेड लक्षद्वीप. सो सम ऑफ द मिनिस्टर्स ऑफ मालदीव्स एक्चुअली कमेंटेड समथिंग, and because of it then it became started coming in the news, and these have been suspended by the Maldives government. Okay, so he's the new the president of Maldives. Now we have discussed it, so will not hesitate to take action against them and all. तो यहाँ पर ये इंडिया, यहाँ पर लक्षद्वीप है, और यहाँ पे somewhere you will find Maldives, है ना. The capital of Maldives is Malé. Okay, yes, so that is what you should be knowing about it, है ना. So Mohammad Muizzu is actually the election happened last year in November, and he has become a new president and all. I hope you are aware of that. Now, just before moving on, guys, you are watching this session. नीचे में just go there on the bottom and on the description. यहाँ पर एक link है, ठीक है ना, expect है ना कि one-on-one counseling session. So click on this link, okay, and you will get this form, Google form, and fill this. Everyone should fill this. And our team will approach you regarding one-on-one counseling session and all. Okay, ठीक है. So we are talking about it, है ना, that Mohammad Muizzu is the new president of Maldives and also High Commissioner of Maldives Ibrahim Shaib was summoned by the External Affairs Ministry. So I mean Maldives ambassador or Maldives High Commissioner to India was summoned also, यानी बुलाया गया उनको. ठीक है, and I mean the protest, you can say sort of protest was registered. अच्छा, एक चीज बताइए, हाई कमिश्नर और एम्बेसडर में फर्क क्या होता है? कैन एनीवन टेल मी? हाई कमिश्नर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हाई कमिश्नर एंड एन एम्बेसडर? एनीवन? हाई कमिश्नर इज एक्चुअली एन एम्बेसडर
ऑफ कॉमनवेल्थ नेशंस है ना, दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन एलिट एग्जाम एज वेल, कॉमनवेल्थ नेशंस, ठीक है, दैट्स कॉल्ड एज हाई कमिश्नर, ठीक है, ओके. Now, there's a question for you, Franz Beckenbauer. I don't know the pronunciation. He was a very famous person. He died recently, and there was a news regarding him in the first page. So he was a former British Prime Minister, former German football player, former American actor, former Foreign Minister of Russia. What is the right answer? बताइए तो. In fact, almost half of the page is dedicated to it. In today's newspaper in Delhi edition, I have seen. I think last में कहीं पर एक पेज है, उसमें आधा से ज्यादा पेज इनकी के बारे में डिस्कशन है. The Hindu newspaper today. So the right answer is former German football player, ठीक है. So ये फर्स्ट पेज है, बट पेज नंबर 15 में जाओगे ना स्पोर्ट्स में, so almost half of the page they have talked about this person, ठीक है. And Franz Beckenbauer, World Cup winning player and coach, dies at 78. He was from Germany, a very famous football player, ठीक है. एक और आर्टिकल थी, जनरल इलेक्शन was free and fair. So Sheikh Hasina has won it 5th times, the Prime Minister of Bangladesh. Okay. And I've told you she belongs to Awami League. The name of the political party is Awami League. ये सब पूछ सकते हैं, ठीक है. Okay. हाँ, yes, B आंसर था. अमन कुमार मिश्रा, you were right. इससे पहले का आंसर B था. You were right, हाँ. Okay. So, Sheikh Hasina, who is currently the Prime Minister of Bangladesh, her father was actually Sheikh Mujibur Rahman. And he was what? First PM of Bangladesh, first President of Bangladesh, first Chief Justice of Bangladesh, first Governor General of Bangladesh. इस तरह क्वेश्चन आ चुका है 2021 में, I think. What is the right answer? Anyone? सबको लाइक बटन प्रेस करते जाना. एवरीवन प्लीज प्रेस द लाइक बटन. यस, द राइट आंसर इज द फर्स्ट प्रेसिडेंट, एक्चुअली, ठीक है ना. फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर तजाउद्दीन अहमद करके थे, ठीक है. It's true that he later became prime minister as well, so he was both president and prime minister of Bangladesh, but first president, ठीक है. So B is the right answer. Yes, Priya Chavan, Namra Aftab, you all right, है ना. He was considered as Banga Bandhu or father of nation of Bangladesh as well. और ये डेट भी पूछा था कि on which date he was assassinated. So 15th August 1975 he was assassinated. ये डेट पूछा था एग्जाम में, ठीक है. Okay, yes, ठीक है. So father of nation in Bangladesh ना, ठीक है. Okay, yes, that is what you should be knowing it, है ना. So first president, है ना, of Bangladesh. Okay, just before moving on, there's a small announcement. We are running this actually mock test 6 to 14 January. In MHCT, Jamia के लिए 15 to 21 January and SLAT के लिए 22nd to 28 January. We are running this mock test. So download our app, go to CLAT section and attempt these mock tests. ठीक है. Okay. And there is on the same app. इसी app में जब आप जाओगे CLAT section में, so there is a button called as Talk to our counselor. उस पे click करना है. You can ask, you can call our counselor and ask questions regarding the courses and all, ठीक है. And every Sunday at 1 PM and 3 PM we are running this legal and GK booster series. Do join it every Sunday. That would be very beneficial. And on 14 January at 6 PM we'll be having a free session, free workshop with Nivedita ma'am. So download our app, go to CLAT section, CLAT and law section, and here you will find it. 2024 test series. For those who are attempting other law entrance exam जैसे MHCT, Jamia, SLAT के लिए, so this is the test series we are providing, and this is the complete course. You can call on this number for that, 95388 95678. Okay, editorial. Here is the editorial. Curb the disillusionment with the traditional rule of law. अब देखो एक कॉन्सेप्ट होता है रूल ऑफ लॉ का. मतलब क्या होता है? What do we mean by the concept of rule of law? That is what the author is talking about here. देखो, rule of law मतलब कहते हैं लॉ इज द किंग. सो नो वन इज अबव द लॉ, है ना. कोई भी आदमी, पहले जैसे किंगशिप होता था उसमें किंग ही को राजा माना जाता था, है ना. सो किंग इज अबव द लॉ एंड ऑल एट दैट टाइम. बट नाउ सिंस द राइज ऑफ डेमोक्रेसीज एंड ऑल, सो वी गिव द कॉन्सेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ, और लॉ इज द किंग, यानी कानून सबसे ऊपर है, यानी कोई भी आदमी कानून से ऊपर नहीं है. नो वन इज अबव द लॉ, ऑल द पर्सन आर एक्चुअली बिलो द लॉ. एक चीज ये मतलब हुआ. दूसरी चीज होता है रूल ऑफ लॉ का मतलब है इसमें प्रोसीजर एस्टैब्लिश वाला या ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ भी होता है. मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल द पुलिस विल नॉट पनिश. पुलिस डू नॉट हैव द पावर टू पनिश. द पावर टू पनिश इज विद द जुडिशरी और द कोर्ट सिस्टम. अदालत किसी को सजा देगी, ठीक है. जैसे फॉर एग्जांपल इफ अ पर्सन एक्स हैज कमिटेड सम क्राइम,
बट ये भी इस पर एलिगेशन है. सो द पुलिस फियर्स दैट परहैप्स एक्स इज द पर्सन हु इज अ क्रिमिनल. सो द पुलिस विल अरेस्ट इट, प्रोड्यूस इट इन द कोर्ट. और ये एक्स बंदा जो अपना लॉयर रखेगा, है ना. सो एक्स पर्सन विल हैव इट्स ओन लॉयर एंड बोथ विल प्रेजेंट देयर फैक्ट्स एंड द फाइनल जजमेंट विल बी डिसाइडेड बाय द जज. दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ. ठीक है. यानी कि अगर पुलिस को कोई क्राइम हुआ, पुलिस को लगता है कि कोई बंदा है जो इन्वॉल्व इस क्राइम में, तो उसको अरेस्ट करेगी, कोर्ट में पेश करेगी और प्रूफ रखेगी. एक्स को भी अपना राइट है डिफेंड करने का. दैट्स व्हाट वी कॉल इट एज प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, लिसनिंग टू बोथ द साइड्स बिफोर पासिंग एन ऑर्डर. देन ओनली द पनिशमेंट विल बी डन. इसलिए कैसा हो सकता है कि मे बी द पुलिस माइट हैव अरेस्टेड द रॉन्ग पर्सन, राइट. तो इसलिए ये जरूरी है कि अदालत जो जज जो है, जो कि न्यूट्रल बंदा होगा, द न्यूट्रल जज विल पास एन ऑर्डर whether the police has arrested the right person or not, right? हाँ, so the police do not have the power to punish. पुलिस ही नहीं, ऐसा नहीं कि पुलिस जो गोली मार दे उसको और इनकाउंटर कर दे. So generally encounter is considered as a staged encounter is considered as against the rule of law and it is prohibited. I mean the police cannot do a staged encounter and kill someone. ठीक है. So that is what is the concept of rule of law. ठीक है. तो इसी के बारे में the author is talking about. Then he is actually giving an example of Dandi March, a mass civil disobedience movement 1930 March अप्रैल में start हुआ था. I hope you are aware of this. So the civil disobedience movement started with the Dandi March, right? इसमें क्या हुआ था? देखो यहाँ पे स्टेट ऑफ गुजरात है. सो गांधी जी स्टार्टेड वॉकिंग फ्रॉम साबरमती आश्रम टू डांडी, है ना. यहाँ पे डांडी है. एंड सॉल्ट मार्च, बेसिकली इट वाज अगेंस्ट सॉल्ट टैक्स, कि सॉल्ट में जो टैक्स लगा उसको हटाया जाए, राइट. So that was the main purpose of this salt march. ये काफी फेमस है. So the author is also talking about the same, है ना, disobedience, civil disobedience movement. Then he's talking about decriminalization of penal laws. तो एक्चुअली क्या होता है, बहुत सारे लॉज जो थे ना ऑब्सोलीट थे. ऑब्सोलीट लॉज, बहुत सारे ओल्ड लॉज थे, उसको खत्म करना है. There are many cases where actually for a small crime, for a small mistake you might be jailed or all. ठीक है. तो उसके लिए फिर एक जन विश्वास एक्ट लाने की बात हुई. ठीक है. जैसे अगर आप पढ़ोगे, सो इट्स रिटन, इट कन्वर्ट्स सेवरल फाइन्स टू पेनाल्टीज, मीनिंग दैट द कोर्ट्स प्रोसिक्यूशन इज नॉट नेसेसरी टू एडमिनिस्टर पनिशमेंट्स एंड ऑल, है ना. रिमूव्स इम्प्रिजनमेंट एज अ पनिशमेंट फॉर मेनी ऑफेंसेस. क्या होता है, बहुत सारे मिस्टेक हुआ या छोटा मोटा क्राइम, उसमें लोग जेल चले जाते थे. सो इंस्टेड ऑफ जेल द फाइन विल बी देयर. ठीक है. फाइन या पेनाल्टी, वो बात सही है कि फाइन की रेट बढ़ा दी गई. आई मीन फाइन विल बी स्लाइटली ऑन अ हायर साइड, है ना. बट इट्स बेटर दैट, हाँ, है ना. सो बट इट्स बेटर कि इंस्टेड ऑफ पनिशिंग ऑन स्मॉल मैटर्स, आई मीन फाइन शुड बी देयर एंड ऑल, है ना. तो ये सब बात हो रही है कि जन विश्वास एक्ट की बात हो रही है ना. सो दीज आर द थिंग्स द ऑथर इज टॉकिंग अबाउट. ओके. देन इन द सेकंड फेज, यस, नाउ आई होप यू आर अवेयर, इंडियन पेनल कोड हैज बीन रिप्लेस्ड विद BNS भारतीय न्याय संहिता. देन CRPC हैज बीन रिप्लेस्ड विद BNSS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता. एंड देन इंडियन एविडेंस एक्ट विद भारतीय साक्ष्य, है ना. देखो ये तीनों लिखा हुआ है ना. पहला फर्स्ट वो IPC को रिप्लेस करेंगे और BNSS जो है CRPC को, भारतीय साक्ष्य जो है वो इंडियन एविडेंस एक्ट हो, राइट. सो दीज आर द थिंग्स यू शुड बी नोइंग इट, है ना. दैट इज व्हाट इज टॉकिंग अबाउट. ओके. फिर पुलिसिंग थ्रू इनकाउंटर्स एंड नाउ पुलिसिंग थ्रू बुलडोजर हैज गेन्ड करेंसी टू रिप्लेस इन्वेस्टिगेशन एंड ऑल. यही वो बता रहे थे. देखो रूल ऑफ लॉ में जो होता है ना, रूल ऑफ लॉ मतलब कोर्ट विल फाइंड समवन गिल्टी, कोर्ट विल फाइंड समवन गिल्टी और नॉट, यानी कौन क्रिमिनल है कौन नहीं है कोर्ट बताएगी, पुलिस नहीं. द पुलिस इज सपोज टू, इफ पुलिस फील्स दैट द पर्सन हैज कमिटेड अ क्राइम, पुलिस विल अरेस्ट इट, प्रोड्यूस इट इन द कोर्ट एंड प्रोड्यूस ऑल द एविडेंसेस एंड द कोर्ट विल पास एन ऑर्डर. तो कोर्ट सजा देगी कि किस आदमी को कौन सजा मिलनी चाहिए. तो जैसे अभी जैसे इनकाउंटर्स एंड बुलडोजर्स एक्शन एंड ऑल, सो दीज ऑल आर टेकन इवन बिफोर द पर्सन इज फाउंड गिल्टी इन अ कोर्ट. तो ये सब कई बार ऐसा होता है कि अभी अदालत में प्रूफ भी नहीं हुआ है कि वो आदमी क्रिमिनल, उससे पहले ही एक्शन हो जाता है. दैट्स, आई मीन, अगेंस्ट द आइडिया ऑफ रूल ऑफ लॉ. दैट इज व्हाट द ऑथर इज टॉकिंग अबाउट. ठीक है ना. जैसे ही इज गिविंग एन एग्जांपल ऑफ इन फ्रांस, a person of Algerian descent was shot, shooting of a young car mechanic of Algerian descent. Again, of course, the police cannot punish, it is the job of the judiciary to punish and all. तो ये सब बहुत सारे एग्जाम्पल बता रहे. देन अगेन देयर हैज बीन इंसिडेंट ऑफ कस्टोडियल वायलेंस एंड ऑल. जैसे ये इसमें इंडियन आर्मी चीफ ऑल्सो विजिटेड पूंछ. पूंछ इज अ डिस्ट्रिक्ट इन जम्मू एंड कश्मीर वेयर एक्चुअली देयर हैव बीन सीरियस एलिगेशंस ऑफ टॉर्चर. दैट क्या हुआ था कि ब्रिगेडियर वाज ट्रांसफर्ड, 3 others were shifted, and army chief said that conduct operation in a post professional manner. There has been allegation that yes,
some people actually were found in police custody or army की custody में थे, and they died, and there have been allegations of torture and all. So that is what the army chief has said कि visit and उन्होंने कहा, मतलब he said to the army personnel and all that behave in a professional manner. Okay, so these things were in the news. तो वही बता रहे हैं कि ये जो है, this is again the violation of the idea of rule of law and all. So these are the things being talked about. The traditional rule of law notion that is premised on uniformity, predictability and all, है ना. So he's basically focusing on this concept of rule of law. And just a shortcut, average rule of law model looks for quick reactive ways for doing repressive justice that focuses more on identifying the targets, accused and all. अब देखो क्या होता है कि जो violating rule of law, जैसे क्या होता है, कई बार जो होता है कि sometimes encounters happen, so people praise it कि हाँ, but you know sometimes maybe an innocent might be killed because you do not know it. ठीक है, तो लोग बोलते हैं कि क्रिमिनल को मार दिया, लेकिन but there is no guarantee ना. You have to produce it in the court and prove it that yes, the person is guilty and the court will give punishment, hanging or whatever it is the case, है ना. तो कोर्ट जो है वो प्रूव करेंगे ना, कोर्ट में मामला जाएगा तब ना प्रूव करेंगे कि पुलिस ने जिसको अरेस्ट किया है वो क्रिमिनल है. हो सकता है कोई इनोसेंट है, कई बार ऐसा भी होता है कि पुलिस अरेस्ट एन इनोसेंट एंड द कोर्ट देन एक्विट्स इट कि नहीं तुमने गलत आदमी को अरेस्ट कर लिया. इन दैट केस इफ पुलिस वुड हैव डन इनकाउंटर देन एन इनोसेंट वुड हैव बीन किल्ड. ठीक है, तो अगर पुलिस उसी केस में अगर इनकाउंटर कर देता तो शायद इनोसेंट मर जाता. इसीलिए दैट इज व्हाई रूल ऑफ लॉ इज वेरी इंपॉर्टेंट. अदरवाइज क्या होगा कि आई मीन if people start killing each other and police starts killing, I mean doing encounter, then of course innocent will start getting that. So this will create a lot of law and order problem, है ना. That is what the author is talking about, है ना. तो इसी की बात कर रहे हैं कि क्या होता है, शॉर्टकट जो होता है वो कई बार डेंजरस भी होता है ना. We have to actually follow the rule of law and all. Okay, साइड में एक आर्टिकल थे unlawful remission and all. Again we have discussed about it in detail, है ना. So that is what he is saying that 2002 riots happened and 11 men were convicted, found guilty in a court in the state of Maharashtra. The truck case was transferred to the Maharashtra state and all, and that's famously called as Bilkis Bano case. Okay, and the Supreme Court has said premature release cannot be done, they should go back to the jail and all. I hope you are aware of this. The bench comprises of Justice Ujjwal Bhuyan and Justice B.V. Nagaratna, and I hope you are aware she is going to be the first woman CGI. अभी तक we have not seen, till now we have not seen any woman Chief Justice of India, but in 2027 we'll be seeing the first woman CGI, that is Justice B.V. Nagaratna, right, है ना. तो इसी की बात करें now, it's not the power of Gujarat government but it was the power of the Maharashtra government who could do so and all, है ना. So that is what is being talked about, है ना. Now, चूंकि हम लोग इतना पार्डनिंग पावर की बात कर रहे हैं, so let's talk about some of the pardoning power of the president and governor and all. So the president has the power to pardon, grant pardon under Article 161, 72, 79, 71. What is the right answer? इस तरह क्वेश्चन आई थिंक जामिया में पूछा है पास्ट में. Which article gives president the power to grant pardon? बताइए. Anyone? Anyone? सबको लाइक बटन प्रेस कर दे जाना. यस, द राइट आंसर इज आर्टिकल 72. ठीक है, 72 जो है प्रेसिडेंट के पास पावर होता है, गवर्नर के पास 161 के अंडर पावर होता है. ठीक है, यस, ठीक है. ठीक है ना. प्रेसिडेंट, पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू ग्रांट पार्डन एंड टू सस्पेंड, रिमिट और कम्यूट सेंटेंस इन सर्टेन केसेस. सिमिलरली द गवर्नर हैज पावर टू ग्रांट पार्डन, सस्पेंड, रिम्यूट और कम्यूट द सेंटेंसेस, है ना. ओके, एन एम्बिशियस पुश फॉर वैल्यूज एथिक्स इन हायर एजुकेशन. नाउ अब वैल्यूज और एथिक्स तो समझते हो गए ना. तो एथिक्स क्या होता है, मतलब इट्स एक्चुअली, है ना, वैल्यूज, है ना. ये क्या होता है, जैसे इट हेल्प्स इन गाइडिंग पर्सन एंड टू डिसाइड व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, है ना. एथिक्स ही पता चलता है कि ये गलत काम, ये नहीं करना चाहिए, ये सही करना चाहिए. नाउ जनरली इफ यू टॉक अबाउट जनरली जो स्कूल या कॉलेज में जो करिकुलम होता है उसमें जनरली वी डू नॉट टॉक अबाउट एथिक्स, है ना, कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए. This is not talked about in our school, colleges and all. And if we see it, that yes, many people do say that we are witnessing the decline in the value system and the ethics in our society. So people actually are becoming less trustworthy or something like that. So he's written an article
The UGC has been issuing regulation, guideline, and directives at breakneck speed. That's some of the important ones missed, drawing the attention of higher education. One such guideline is Mulya Pravah. A modified version of this Mulya Pravah 1 includes inculcate human values and professional ethics in higher education institution. Yes. तो मूल्य प्रवाह की बात कर रहे हैं कि एथिक्स की बात होनी चाहिए हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, यानी यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस में, एंड दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है ना. सो द मोस्ट प्रोमिनेंट ऑफ दीज आर फेवरेटिज्म इन हायरिंग, ट्रेनिंग, पे, प्रमोशन एंड ऑल. अब देखो क्या होता है, कई जगह अनएथिकल बिहेवियर होता है ना, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस में. ठीक है, आई एम नॉट सेइंग कि एवरीवेयर, बट यस, इन मेनी केसेस इट हैपेंस इन प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, समटाइम्स इवन इन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन दीज थिंग्स डू हैपन. क्या फेवरेटिज्म होता है ना, कि जैसे अगर अपने रिश्तेदार दोस्त को हायर करवा दो, दैट्स फेवरेटिज्म. देन ट्रेनिंग, पे एंड प्रमोशन, तो अपने जान पहचान के लोगों को या जो मतलब जो ज्यादा फेवरेट है उसको प्रमोट करवाने का. व्हाट हैपेंस इन प्राइवेट एंड गवर्नमेंट, यू मस्ट हैव सीन सेक्सुअल हरासमेंट, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन आल्सो हैपेंस इन प्रमोशन, इनकंसिस्टेंट व्यू ऑन डिसिप्लिन, लैक ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी, यानी बहुत सारी बात सीक्रेट बात बाहर रिवील कर देते हैं, जेंडर डिफरेंशिएशन. सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स, है ना. नॉन परफॉर्मेंस फैक्टर इन अप्रेजल, यानी सैलरी इंक्रीमेंट होती है तो जो ज्यादा अच्छा काम कर रहा है उसकी नहीं हो रही, जो कम काम कर रहा है बिकॉज ही माइट बी क्लोज विद द सीईओ और मे बी विद द पॉलिटिशियन और समथिंग लाइक दैट, है ना. ये सब चीजें सारी, तो ये सब चीजें, these are some of the unethical things that happens in different organization. It might be a private or it might be a government one. तो इसी की वो बात करें, these vices मतलब ये बुराई है ना, the bad things may not be specific or exclusive inclusive to higher education institution but could be rampant among them and all, है ना. ये हर जगह होता है, इवन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में भी होता है, राइट. तो ये हर जगह है ना, दैट इज व्हाट इज बीइंग टॉक्ड अबाउट. तो इसीलिए मूल्य प्रवाह यानी एथिक्स वगैरह की बात कर रहे हैं ना. सो द ऑथर इज एक्चुअली टॉकिंग अबाउट द एथिक्स एंड ऑल, है ना. Underscores the need for utmost transparency in administration and highlight that decision making in higher education must be solely guided by institution public interest. Transparency मतलब क्या होता है ना, means whatever the decision should be taken, it should be revealed to the public why we have taken this decision. जैसे for example मान लीजिए एक यूनिवर्सिटी है, अब उसको एक टीचर हायर करना है, तो कैसे हायर करें. ट्रांसपेरेंसी का मतलब क्या, पहले वो पब्लिक में लिखे कि हमको ना एक सब्जेक्ट का टीचर चाहिए, इट शुड बी मेड इन पब्लिक. Then all the people should be invited. All the people, irrespective of religion, race, caste, gender, should be invited to apply for it. And the most healthy one, the most deserving one should be selected. है ना? That is the healthy process of selection of a teacher or a faculty in any university. ठीक है? और सब कुछ ट्रांसपेरेंट रहे कि देखिए इस बेसिस पे हमने एक बंदे को सेलेक्ट किया, है ना. So that is what the idea should be, to ensure that things should be done in ethical way. The guideline expects higher education institution to ensure integrity, है ना. इंटीग्रिटी मतलब क्या होता है, रॉक सॉलिड ऑनेस्टी. सो ऑनेस्टी इवन इन द वर्स्ट सर्कमस्टांसेस, यानी एकदम एडवर्स सर्कमस्टांसेस है उसके बावजूद भी अगर आदमी ईमानदार है तो उसको कहते हैं मैन ऑफ इंटीग्रिटी या पर्सन ऑफ इंटीग्रिटी, है ना, या वुमेन ऑफ इंटीग्रिटी, व्हाटएवर इज द केस. ठीक है. ट्रस्टशिप, है ना, हार्मनी, अकाउंटेबिलिटी, इंक्लूसिवनेस, कमिटमेंट, है ना. सो दीज ऑल आर एक्चुअली द वैल्यूज, है ना, जो एक हर आदमी के अंदर होना चाहिए, है ना, स्पेशली इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एज वेल, है ना. सो दीज आर द थिंग्स बीइंग टॉक्ड अबाउट, है ना. ओके तो बहुत सारी चीजें जैसे अकाउंटेबिलिटी हो गई, जवाबदेही, ट्रांसपेरेंसी, फेयरनेस, ऑनेस्टी, है ना, हाईएस्ट डिग्री ऑफ एथिक्स, दीज आर द थिंग्स बीइंग टॉक्ड अबाउट. तो जनरली क्या होता है आजकल, मतलब जनरली इन आवर सोसाइटी वेरी फ्यू पीपल टॉक अबाउट एथिक्स एंड ऑल, दैट्स व्हाई इट बिकम्स इंपॉर्टेंट, है ना. द एम्फेसिस ऑन द नीड फॉर एंड इंपॉर्टेंस फॉर मेंटेनिंग कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन इज रिमूविंग एज इट रन्स काउंटर टू द राइट टू इंफॉर्मेशन. अच्छा, कभी कभी ये डिबेट होता है कॉन्फिडेंशियलिटी वर्सेस आरटीआई. क्या आपको रिवील, आरटीआई क्या कहते हैं, गवर्नमेंट पब्लिक ऑफिस में तो आपको अगर कोई इंफॉर्मेशन मांग रहा है तो आपको शेयर भी करना है, और बहुत सारी ऐसी चीजें आपको सीक्रेट भी रखना है. सो देयर आर समथिंग दैट नीड्स टू बी केप्ट सीक्रेट, है ना. कुछ चीज होता है ना सीक्रेट रखना, रिवील नहीं करना. आरटीआई में क्या होता है कि इंफॉर्मेशन शेयर करना होता है. तो इसको बैलेंस करना बहुत इंपॉर्टेंट है ना, कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट इज सपोज टू शेयर इंफॉर्मेशन एज वेल, बट द सीक्रेट इंफॉर्मेशन जो जिसको नहीं शेयर करना उसको नहीं भी शेयर करना. सो दैट बैलेंस नीड्स टू बी मेंटेन्ड एज वेल, है ना. A certain teacher is a noble profession. The teacher play a crucial role in shaping the character, personality, and career of the students. Yes, of course, teacher का जो रोल है बहुत नोबल प्रोफेशन है, और उसका बंदे का रोल या जो भी टीचर है उनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज वो है ना, कहा जाता है द डेस्टिनी ऑफ अ नेशन इज शेप्ड इन क्लासरूम. द डेस्टिनी ऑफ अ नेशन इज शेप्ड इन क्लासरूम. किसका कहा हुआ है, यू नो, आई थिंक एपीजे अब्दुल कलाम हैज सेड, है ना, as far as I remember. आप एक बार चेक कर लीजिएगा, बट as far as I remember APJ अब्दुल कलाम है ना. डेस्टिनी ऑफ ए नेशन इज शेप्ड इन क्लासरूम का मतलब क्या होता है कि
जो नेशन जो क्लासरूम में अगर अच्छे से पढ़ाया जाएगा, टीचर अच्छा होगा, ईमानदार होगा, एथिक्स होगा, एथिकल होगा, तो ही बच्चा जो है वही चीज ग्रैब करेगा, राइट, है ना। एंड दैट इज व्हाई डिटरमाइंस द डेस्टिनी ऑफ ए नेशन एंड ऑल, है ना। मूल्य प्रवाह 2.0 एक्सपेक्ट स्टाफ एंड स्टूडेंट यूनियंस टू सपोर्ट द एडमिनिस्ट्रेशन इन डेवलपमेंट एक्टिविटीज एंड रेज इश्यूज इन अ डिग्निफाइड मैनर, है ना। तो ये सब चीजें कि अगर मूल्य प्रवाह 2.0 चूंकि एथिकल गाइडलाइंस वगैरह है, तो इसमें है कि अगर आपको कोई बात रेज करनी है यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, तो कैसे डिग्निफाइड मैनर में आप अपनी बात रेज कर सकते हैं। दीज आर ऑल्सो बीइंग टॉक्ड अबाउट। सो ये मूल्य प्रवाह के गाइडलाइंस है ना, ग्लोबल सिटीजनशिप, कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यूज, ट्रस्टीशिप, सस्टेनेबिलिटी, है ना, दीज आर द थिंग्स वी आर टॉकिंग अबाउट, है ना। RTI is exception for it. Yes, Astha Vasti, you are right. There are some clauses where there is exception under RTI. Yes. अंडरस्टैंडिंग यूरोपियन यूनियंस कार्बन बॉर्डर टैक्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो एक्चुअली ये आर्टिकल आ रही थी लास्ट ईयर भी न्यूज में था। व्हाई इज यूरोपियन यूनियन कार्बन बॉर्डर टैक्स वरीइंग अदर कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया। तो क्यों इंडिया को एतराज है यूरोपियन यूनियन के कार्बन बॉर्डर टैक्स से। इसका नाम है कार्बन बॉर्डर टैक्स का CBAM करके नाम होगा, देखो लिखा होगा कहीं पर, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। Now, why is actually India and other developing nations raising it? है ना, we have because we have called it as protectionist and even trade weapon. देखो अब इसमें पहले आपको समझना पड़ेगा कार्बन लीकेज क्या होता है, then you will be able to understand it, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल कोई यूरोपियन कंट्री है, यूरोपियन यूनियन क्या है, अब वहां कोई कंपनी है एंड इट वांट्स टू बाईपास इन्वायरमेंटल लॉज। तो यूरोपियन यूनियन का इन्वायरमेंटल लॉज बहुत स्ट्रिक्ट है मान लो, तो और मान लीजिए फॉर एग्जांपल आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल, इंडिया का उतना स्ट्रिक्ट नहीं है इन्वायरमेंटल लॉज, तो दैट कंपनी विल कम टू इंडिया, वहां सारा मैन्युफैक्चरिंग करेगी और फिर सारा प्रोडक्ट वापस ले जाएगी, ओके। बट द यूरोपियन यूनियन नाउ हैज पुट टैक्स, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म या कार्बन बॉर्डर टैक्स। इसका मतलब है कि अगर डेवलपिंग नेशंस में कोई प्रोडक्ट बना एंड दैट प्रोडक्ट इज अ रिजल्ट ऑफ लेट्स से पॉल्यूशन, और उसमें पॉल्यूशन हुआ तो उसमें फिर टैक्स लगेगा, कार्बन बॉर्डर टैक्स, ओके। तो ऐसा भी हो सकता है जैसे इंडिया में कोई चीज मैन्युफैक्चर हुआ और वहां जा रहा है, मान लो फॉर एग्जांपल आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल, स्टील मैन्युफैक्चर हुआ, जस्ट दिस इज एन एग्जांपल, या कोई और चीज मैन्युफैक्चर हुआ, मान लीजिए कार स्ट्रक्चर, तो इसे बनाने में हो सकता है थर्मल पावर प्लांट यूज हुआ हो, तो पॉल्यूशन हुआ होगा, तब क्या होगा, इसमें टैक्स लग जाएगा। व्हाट विल हैपन, द प्रोडक्ट विल बिकम कॉस्टली हियर, जब भी टैक्स लगेगा तो, जब कॉस्टली होगा तो नॉन कंपेटिटिव हो जाएगा, सो पीपल द प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग सोल्ड विल बिकम लेसर। अगर कोई दाम चीज महंगी हो जाती तो लोग नहीं खरीदेंगे ना, ओके। नाउ अब क्यों, व्हाई आर एक्चुअली द कंट्रीज प्रोटेस्टिंग इन द डेवलपिंग कंट्रीज, बिकॉज डेवलपिंग कंट्रीज बिलीव कि वी शुड बी गिवन सम लीवे, है ना, आता ना CBDR, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। So the developed nations have already become richer, they can move towards the renewable energy, but we as a developing nation are still far behind it, and we will take some more time to move towards the renewable energy. So like for example in India still we have somewhere around 60% using coal and all, ठीक है, तो अभी भी हम लोग यूज करें because yes of course we need some more time। तो उस केस में जो हमारा प्रोडक्ट है वो तो महंगा हो जाएगा वहां जाके। So that is why the developing nations who are still yet to move towards the renewable energy are actually protesting against this, ठीक है, आप समझ गए ना इसका मतलब, you got it, है ना। देखो ये कार्बन लीकेज में ये होता है कि कंपनीज जो है ना रिस्ट्रिक्शन अवॉइड करने के लिए ऐसी कंट्री में जाके अपना लॉन्च करती है, ऐसी कंट्री में जाकर के मैन्युफैक्चरिंग करती है जहां पर एनवायरमेंट लॉज उतने स्ट्रिक्ट नहीं होगा ना, हाँ। सो दैट इज व्हाट, ओके, सो दीज आर थिंग्स being talked about, you got it, is it clear guys? So that is what और यूरोपियन यूनियन इसलिए कर रहे हैं कि they want to reduce the carbon greenhouse gas emission, that is what their target is, so they want to achieve that, है ना। Debating India's new hit and run law, इस पर we have already done a lot of debates and all, है ना, कि new hit and run law में debate ये है कि it says 106 section says कि if someone has hit, जैसे मान लीजिए कोई ट्रक ने गलती से हिट कर दिया किसी को, so he should not run away, अगर वो भाग गया so he might be jailed for 10 years and fine also हो सकता है, ठीक है। तो अब इशू क्या है, और 7 लाख तक फाइन हो सकता है। तो इफ ट्रक ड्राइवर हैज मिस्टेकनली हिट समवन, और कोई भी कार ड्राइवर भी हो सकता है, देन ही इज सपोज टू रिपोर्ट इट टू द पुलिस स्टेशन कि मेरे से गलती से लग गया ये जो भी। लेकिन उसमें इशू ये है कि अगर वो वहां पर से रहेगा, मतलब द ट्रक ड्राइवर्स आर सेइंग दैट इफ दे विल नॉट रन अवे, अगर वो भागेगा नहीं तो क्या होगा, सो पीपल माइट लिंच हिम। ये भी होता है ना कि भीड़ आती है, मारना पीटना शुरू कर देती है, एंड दैट इज व्हाई इट बिकम्स इंपॉर्टेंट समटाइम्स दैट द ड्राइवर इज सपोज टू रन। अगर उसकी गलती नहीं भी होगी तो भी उसको कई बार भागना पड़ता है,
अगर नहीं भागेंगे तो लोग, जो विलेज एरिया के लोग हैं, वो उसको पीट देंगे. एंड दैट इज वाई दे आर प्रोटेस्टिंग दैट नो दिस लॉ इज टू स्ट्रिंजेंट, बहुत ज्यादा सख्त है एंड ऑल. दैट इज व्हाट दे आर सेइंग. खैर, सो दिस द क्लास वी आर वाचिंग इट. नीचे जाना है ना, डिस्क्रिप्शन सेक्शन में हैज अ लिंक. इस लिंक पे क्लिक कीजिए, ये ओपन होगा गूगल फॉर्म एंड फिल इट. ठीक है, इन द डिस्क्रिप्शन सेक्शन हियर इट इज रिटन 1-on-1 काउंसलिंग सेशन लिखा है ना, उसी के बाद ये लिंक है, इसको क्लिक कीजिए and fill this Google form. So this is all about today's class. Please subscribe to our channel, follow us on Instagram, Facebook, Telegram, and download the BYJU'S exam prep app. Thank you everyone. Thanks for watching. Have a nice day.